Hi everyone, welcome to the episode 2 of this series that I've started in which we discuss only the important news which are useful to us as traders and investors. So today also I have brought in a bunch of topics. We'll first discuss about Adani ports. There was one recent news about a port in Israel being attacked and all that, so we'll discuss that. Then we'll move on to the instant food delivery market in the quick commerce space. It is growing very aggressively, and we'll talk about that. Then we'll see how things are looking for the two-wheeler sector in India. We'll see कि future में कैसा scope है इसका, and we'll also talk about some major players. Then we'll look on to the stocks that were bought and sold by mutual funds in the month of May, which is last month, and then we'll end it with some discussion about basmati rice prices and exports. तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं इस हाइफा पोर्ट और हैफा पोर्ट के बारे में. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट टू इसराइल. इसराइल के जो इम्पोर्ट्स हैं उनका 30% ये पोर्ट कंट्रोल करता है. एंड अडानी पोर्ट्स ने 2023 में इसमें एक 70% स्टेक अक्वायर करा था फॉर $1.2 बिलियन, राइट. तो एज वी नो कि ये इसराइल के 30% इम्पोर्ट्स को हैंडल करता है. अगर अडानी पोर्ट की बात करें तो अडानी पोर्ट के जो एनुअल कार्गो वॉल्यूम्स हैं उसका 3% ये कंट्रीब्यूट करता है. एंड अडानी पोर्ट्स का जो रेवेन्यू है उसमें भी 5% इस पोर्ट का कंट्रीब्यूशन है. अब क्या हुआ कि सैटरडे नाइट को ईरान ने इसराइल की ये जो हाइफा पोर्ट है और जो नियर बाय ऑयल रिफाइनरी भी है यहाँ पे वहाँ पे अटैक करा था. तो देर वर सम रूमर्स एंड स्पेकुलेशंस कि ये जो पोर्ट है ये डिस्ट्रॉय हो गया है. देर वाज अ लॉट ऑफ फेक न्यूज़ फ्लोटिंग अराउंड, बट द CFO of Adani Group, he denied that news on Twitter, and there were also then further there were reports that the cargo operations on this port haven't been affected yet. So there isn't, so मतलब जब न्यूज़ आई थी कल कि पोर्ट डिस्ट्रॉय हो गया था बिकॉज अडानी ने ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करा है इस पोर्ट पे, तो देर वॉज अ लॉट ऑफ पैनिक, बट देन इट वॉज clarified later on कि it was just fake news. So that is all I wanted to discuss about this port thing. Then we'll move on to this instant food delivery in the quick commerce space. So this is मतलब ये market क्या है कि before when the food delivery came in India, तो for the majority of time it was like कि मतलब मैं food order करूँगा and my food will come in around 30 to 35 minutes. But now what these players are doing is they have launched this instant food delivery market in which they are delivering foods in they are delivering ready to eat meals in just 10 to 15 minutes, which is insane. And this space is growing massively. It is growing at a monthly growth rate of 50 to 60%, which is really high, right. And if we talk about some expectations about 2026 till 2027, so it is expected that कि जो ये quick commerce companies हैं इनका 8 to 15% रेवेन्यू इस इंस्टेंट फूड डिलीवरी से आएगा. इनका 25 से 30% प्रॉफिट्स इस इंस्टेंट फूड डिलीवरी से आएंगे. एंड ये जो सेगमेंट है ये क्विक कॉमर्स के लिए काफ़ी अच्छा है बिकॉज क्या होता है कि क्विक कॉमर्स दो चीज़ों में डिवाइडेड है. एक तो पूरा वो ग्रोसरी वाला पार्ट, एंड देन दिस सेकंड थिंग्स आर जैसे फैशन हो गया, जैसे ये फूड डिलीवरी हो गया. इनमें क्या है, मार्जिन्स अच्छे हैं. ग्रोसरीज इज अ नीड, तो वहाँ पे इतने अच्छे इनको मार्जिन्स नहीं मिलते. वहाँ पे ग्रोसरीज में इनको पूरा वॉल्यूम देख के प्ले करना होता है. लेकिन फूड एंड फैशन जो सेगमेंट्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छे मार्जिन्स है. सो दैट्स हाउ आई थिंक they'll be able to increase and scale their profitability in these food and fashion segments. लाइक आई सेड, क्योंकि ग्रोसरीज पूरा एक वॉल्यूम का गेम है, वहाँ पे इतने ज़्यादा आपको मार्जिन्स मिलते नहीं है, तो वहाँ पे यू हैव टू क्विकली गेट ऑन ऑर्डर्स एंड दैट्स हाउ यू मेक मनी. बट इंस्टेंट फूड में यू कैन easily get 40 to 50% margins, and that's what is being seen in the players recently. Like Zepto का Zepto Cafe आया है. They recently announced कि they crossed 100,000 orders. उनकी GMV it crossed $100 million. देन ब्लिंकिट ने भी एक बिस्ट्रो लॉन्च करा है. स्विगी ने स्नैक बोल्ट लॉन्च करा है. बिग बास्केट ने भी रिसेंटली एंट्री लिया. देयर आर ऑल्सो न्यूअर प्लेयर्स लाइक स्विश, जिंग, रेबल फूड्स जो कि अपने इंडिया का लार्जेस्ट क्लाउड किचन ऑपरेटर है, उसने भी ये
They have launched called Quickies, this thing which is also doing this instant food delivery. So this is a very interesting space to track, and I think कि क्विक कॉमर्स प्लेयर्स की प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है यहाँ से. They can achieve good scale here. इतना इतना नहीं आएगा because see, this is a uh, very small and fast growing market. तो ये क्या है, सैचुरेट बहुत जल्दी करेगा. वी सॉ कि दो कैटेगरीज है, एक तो ग्रोसरीज है एंड दिस फैशन एंड इंस्टेंट फूड. तो ग्रोसरीज इज अ नीड, उसका मार्केट ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा होगा बिकॉज हर किसी को ज़रूरत है ग्रोसरीज की, बट नॉट एवरी वन रिक्वायर्स 10 मिनट डिलीवरी फूड और फैशन. सो ये थोड़ा सैचुरेट जल्दी होगा, लेकिन तब तक बहुत अच्छी ग्रोथ रेट के साथ इट विल कीप ग्रोइंग विद अमेजिंग मार्जिन्स. Now let's move on to the two wheeler sector. सो टू व्हीलर सेक्टर की अगर अपन बात करें तो जो यहाँ पे एंट्री लेवल जो मोटरसाइकिल्स होती हैं विच आर आई थिंक 110 से 125 सीसी को आई थिंक एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स कंसिडर करते हैं. तो दीज आर द ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर आर टू व्हीलर स्पेस बिकॉज यहाँ पे ही अपनी मेजॉरिटी सेल्स आती हैं. एंड the reason this two-wheeler sector is looking good, there are three reasons mainly. क्योंकि एक तो रूरल सेंटीमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है, रूरल स्पेंडिंग वापस आ रही है एज कम्पेयर टू अर्बन स्पेंडिंग. एंड ये जो एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स हैं दे आर मोर पॉपुलर टुवर्ड्स द रूरल पीपल when compared to the urban people. Also, there are expectations of very good monsoon this year. So rural earnings ऊपर जाएंगी, rural spending ऊपर जाएगी, and ultimately the motorcycle sector will also benefit. And there was also this recent 50 basis points rate cut by RBI, and it is also going to help. तो ये जो एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स हैं, ये जो सेगमेंट है, मतलब टोटल अगर टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो इट ग्रू एट 5.1% लास्ट ईयर इन FY25. एंड ये जो एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स का है इट ग्रू एट 12.7%. सो इट इज़ बीटिंग इंडस्ट्री दिस सेगमेंट. एंड देयर आर एंड एज वी डिस्कस्ड कि ऑलरेडी काफ़ी सारे ग्रोथ फैक्टर्स इसमें अच्छे हैं. तो वी कैन कीप ट्रैकिंग दिस. अगर मैं मेजर प्लेयर्स की बात करूँ यहाँ पे तो हीरो मोटोकॉर्प, obviously everyone knows it commands a 90% market share in the 100cc segment. They also made some very good gains in the 120cc category. Their market share was up 2.5% in this category because they recently launched this Extreme 125R, of which they have sold around 3 lakh units, and it really helped them. एंड अगर 125cc सेगमेंट की मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो चीपेस्ट बाइक है हीरो सुपर स्प्लेंडर, वो इन्हीं की है विच कॉस्ट अराउंड 80 to 81,000. सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस थिंग फॉर हीरो मोटोकॉप. अगर अपन एक और बजाज ऑटो की बात करें, अगर उनके मार्केट शेयर की बात करें इन दिस अराउंड 125 या उससे ऊपर का सेगमेंट, तो in FY23 the market share of Bajaj Auto in that segment was 21%. Then अगले साल बढ़ के FY24 में went up till 26%, and last year it remained around 24%. So these are the two major players, Hero MotoCorp and Bajaj Auto. Uh, these two players we have to track in this sector. Now next, let's move on to the stocks that were bought and sold by mutual funds in May. तो लास्ट मंथ म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी सारी बाइंग करी थी. अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं तो इंडस्ट्रियल्स में काफ़ी अच्छी बाइंग थी, फाइनेंशियल सर्विसेज में, कंज्यूमर सेक्टर में काफ़ी अच्छी बाइंग थी. एंड देयर वाज जस्ट वन सेक्टर जहाँ पे नेट आउटफ्लोज थे, इट वाज द यूटिलिटी सेक्टर. ITC was the most bought stock last month. There were inflows of around 8,000 crores in ITC, and other stocks which were bought by these mutual funds were HDFC Bank, Eternal or Zomato, Airtel, Indigo, Bhel, Kirloskar Oil Engines, Swiggy, Bajaj Finserv, PNB Housing Finance, Canfin Homes. These were the stocks that were mainly bought by the mutual funds. And if we look at stocks that were mutual funds exited, they were Max Financial Services, FSN E-commerce, that is Nykaa, Coromandel International, BSC, Container Corporation of India. These were the major stocks that saw some outflows from mutual funds. Now lastly we'll discuss about basmati rice. So as we all know कि ईरान और इसराइल में काफ़ी बड़ी वॉर हो रही है,
and in my previous video I discussed some impacts of it. There is one another impact that I missed. It was Iran. क्या है कि is a big market for India's rice exports. अगर मैं बात करूं अपने बासमती राइस एक्सपोर्ट्स की, तो ईरान इज 12%। मतलब अपन जितना भी बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं 12% उसका ईरान में इंपोर्ट होता है। अगर टोटल राइस एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पिछले साल ईरान इन FY24 वी एक्सपोर्टेड $690 million वर्थ ऑफ राइस टू ईरान। देन FY25 में वो बढ़ के $757 million तक पहुंच गया। So Iran is a very big market for our rice exports. Now the thing which happened is कि बासमती राइस की पिछले 2 महीनों में prices increased by 15 to 20% because there was a lot of demand in exports. But now because of this war, maybe we'll see some decline, and we have already actually started to see some decline. The prices of basmati rice, which had touched around $1,000 per ton, have now corrected back to around 900 $950 per ton. So this is something that will be suffering due to this war. अगर ये war और escalate होती है, then we'll see even more declines in this rice export thing. So let's hope कि ये war जल्दी मतलब de-escalate हो, because there are a lot of factors. ऑयल का दिक्कत है, बासमती राइस का दिक्कत है, एंड वो शिपिंग का पूरा दिक्कत है, लाइक आई एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट वीडियो. So yeah, that is all the things that I wanted to discuss about today. There are also some things remaining, like Jana Small Finance Bank, auto part makers, बहुत सारे headwinds they are facing. Then I wanted to talk about quick commerce discounts, but I don't think I'll be able to complete them all in this video. So maybe I'll make another one, and we'll talk about them tomorrow. So thank you.